So, so because Euclid's division lemma has been removed from the syllabus, we'll start with fundamental theorem of arithmetic. So theorem 1.2, which is fundamental theorem of arithmetic, what does it say? Is every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. So every composite number will have a unique prime factorization. Unique as in the prime factors are unique, but the order can be same. So what you need to do, if you don't consider the order, if order is immaterial, then in that case, okay, order may change, but the factors which are going to be there, the prime factors which are going to be there, those prime factors are unique for different composite numbers. So prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factor. फॉर एग्जाम्पल इन जनरल व्हेन अ कॉम्पोजिट नंबर x, सो हमारे पास एक कॉम्पोजिट नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर्स अगर देखते हैं तो दैट इज p1 p2 pn. सो वेयर p1 p2 pn आर प्राइम्स एंड रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, उसके बाद वो यूनिक हो जाएगा कि आपने स्पेसिफाई कर दिया कि हमेशा हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे. तो उस केस में जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा किसी भी नंबर का, दैट विल बी यूनिक फॉर दैट नंबर, दैट विल बी मतलब डिस्टिंक्ट फ्रॉम फॉर दैट नंबर. किसी और नंबर का सेम प्राइम फैक्टर जो है नहीं आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे 32760 है, इसको प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 2 के 3 टर्म्स हैं, फिर twice 3 5 7 and 13, these are the prime factors. If we write it in powers and arrange it in ascending order, so this prime factorization is unique for this number 32760. Any other number cannot have same prime factors with the same powers. So once we have decided that the order will be ascending, then the way the number is factored is always unique, which is this theorem. That is what theorem 1.2 says, and which is known as fundamental theorem of arithmetic. क्लियर है सभी बच्चों को? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किसे कहते हैं? Yes, sir. Now this question is quite often discussed in the class. So यहाँ पे है जो example 5, वो ये कह रहा है कि consider the number 4 raised to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0. So what you need to do, you need to write the prime factorization of 4 raised to the power n. 4 raised to the power n is 2 square raised to the power n, or 2 raised to the power 2n. So that means 2 into 2 into 2 up to 2n times, right? So by fundamental theorem of arithmetic, so by how do we write the answer is by fundamental theorem of arithmetic, we know that prime factorization, so prime factorization of every composite number so prime factorization of every composite number is unique, right? Hence 4 raised to the power n has only powers of 2 as factors, right? Now, for a number to end with 0, but
for a number to end with 0, it should have at least one 2 and one 5 in its prime factorization. Now, since 4 raised to the power n has only 2 as its factors and no 5, hence it will never end with 0. Is it clear, Richo? Clear है बच्चों? Yes, sir. Basically, Yes. more an explanatory kind of stuff where you need to explain what you are thinking here. Has everyone written it? So one second. One. Okay. हो गया, लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now, in this example, we have to find the LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method. So, prime factorization method में 6 के prime factors लिखेंगे 2 raised to the power 1 into 3 raised to the power 1. 20 के prime factors लिखेंगे. So, this is 2 square into 5 raised to the power 1. Now, HCF of 6 and 20 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसका हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर यहाँ पे बस 2 है और उसका हाईएस्ट उसका जो लोएस्ट पावर है सो लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर सो कॉमन फैक्टर इज 2 और इनमें से लोएस्ट है 1 तो बेसिकली HCF of 6 and 20 is 2 raised to the power 1 which is equal to 2. So basically, product of common factors product of common factors with smallest power. LCM of 6 and 20 is equal to जितने भी factors वो सब and highest power of that means 2 square into 3 raised to the power 1 into 5 raised to the power 1. So which is 60. So product of highest power of each prime factor
ठीक है, this will give you LCM. Now we know that for two numbers, the product of the HCF and LCM of the number is equal to product of the number itself. So HCF of two numbers A and B into LCM of two numbers A and B is equal to A cross B. So from the above, you might have noticed that HCF of 6 and 20 is 2, HCF of 6, LCM of 6 and 20 is 6. So you can see that HCF into LCM is equal to 2 into 60, 120. And product of the numbers, product of numbers A into B is 6 into 20, that is again 120. So this is verified. We can use this result to find the LCM of two positive number if we have already found the HCF of two positive integers. जैसे यहाँ पे हम लोग को HCF जब निकल गया तो LCM निकालने के लिए फिर ये मेथड ना यूज करके हम लोग सीधे ये कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ A into B by HCF of A comma B. So this is equal to LCM of A comma B. So LCM of A comma B is A into B divided by HCF of A comma B. सर ये नीचे वाला एक बारी वाला फिर से समझा दो LCM A comma B. ये मैंने बोला कि अगर दो नंबर हैं तो अगर जो उनका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या है 6 into 20, और उनके HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा ये दोनों इक्वल होते हैं. मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF and LCM. So HCF of two numbers A and B into LCM of two numbers A and B is equal to product of number A and B. This is a formula which helps you to find the LCM of A and B when you already know A and B and their HCF. So what you will do, you will divide the product of A and B by its HCF, you will get the LCM. Okay, sir. इस एग्जाम्पल में A और B 6 into 20 था और उसके HCF से डिवाइड कर लो 120 by 260 आ गया जो कि इसका LCM हो जाएगा. तो बिना LCM निकाले हम लोग सीधे इस फॉर्मूले को यूज करके LCM निकाल सकते हैं. बट ये दो नंबर के लिए ही वैलिड है, मतलब इट इज वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स, नॉट फॉर मोर देन टू नंबर्स. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. तो देखो जैसे इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दिया होगा कि फाइंड द HCF of 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM. Hence find their LCM मतलब वो चाह रहा है कि आप फॉर्मूला को यूज करके उसका LCM निकालें. So HCF of 96 and 404. So पहले prime factors 96 का लिखेंगे. So this is 2 to the power 5 into 3 to the power 1. और 404 को लिखेंगे. So this is 2 square into 101 raised to the power 1. Basically आपको यहाँ पे निकाल के देखना पड़ेगा 96 को. पहले जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया 48 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया 24 हो गया, 2 से डिवाइड करके 12 मिला, 2 से डिवाइड करके 6 मिला और 2 से डिवाइड करके 3 मिला. उसी तरह 404 है, इसको 2 से डिवाइड किया 202 हो गया, 2 से डिवाइड किया 101 हो गया,
ठीक है, और फिर ये खुद ही प्राइम नंबर है तो यहीं पे रुक जाएंगे. सो अब नाउ यू नो HCF of 96 and 404 इस कॉमन फैक्टर. कॉमन तो 2 है, उसका लोएस्ट पावर 2 है, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया. नाउ LCM of 96 and 404 is equal to product of A and B by HCF. A into B by HCF of A comma B. A into B means 96 into 404 by HCF, that is 4. So 404 into 24 if you calculate. So this is 9696. आप नॉर्मल तरीके से एलसीएम भी निकाल सकते थे. एलसीएम निकालने के लिए सारे फैक्टर्स उसके हाईएस्ट पावर करते हैं, मतलब 2 to the power 5 into 3 to the power 1 into 101. So 2 to the power 5, 32 into 3, 96 into 101 करोगे तो भी 9696 आए. So you can use any method, either direct method to find the LCM, or using this relation that product of two numbers divided by HCF gives you the LCM. इस relation को use करके भी कर सकते हैं. Clear है बच्चों? Yes, sir. So, Now here you have to find HCF and LCM of three numbers using prime factorization method. So you need to be careful that here the rule is not valid, that the product of number divided by HCF will give you LCM. That rule is only valid up to two numbers. This is three numbers here. So that rule will not be valid here. So यहाँ पे हम लोग HCF और LCM निकाल रहे हैं. So पहले 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 to the power 1, 3 to the power 1. 72 is 2 cube into 3 square, and 120 so this is 120 को अगर हम लोग डिवाइड करके देख लें, 260, 230, 215, 35 and 51. So this is 2 cube into 3 raised to the power 1, 5 raised to the power 1. So once you have got the prime factors, now HCF is common factor and their lowest power. Common factor देखो 2 भी common है और 3 भी common है. उनके lowest power, 2 का lowest power 1 है, 3 का भी lowest power 1 है, तो 2 into 3 that is 6. And LCM if you have to find all the factors with highest power, 2 का highest power 3 है, 3 का highest power 2 है, 5 का highest power 1. So 8 5s are 40 into 9 is 360. So LCM is equal to 360. यहाँ पे देखो कि इनका प्रोडक्ट जो है ना 672 और 120 और 6 और 360 का प्रोडक्ट कंप्लीटली डिफरेंट है. दे आर नॉट सेम. क्लियर है बच्चों? yes, sir. ये जो है ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 4 रेज टू द पावर n वाला था. मैं बस इनिशियल लिख दे रहा हूँ, बाकी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं. 6 रेज टू द पावर n इज 2 raised to the power 1, 3 raised to the power 1, raised to the power n, or 2 raised to the power n into 3 raised to the power n. Now, by fundamental theorem of arithmetic, since
the prime factors of 6 raised to the power n is unique, hence it cannot have 5 as factor, hence 6 raised to the power n does not end with digit 0. है ना, कोई भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए. यहाँ 2 का तो पावर है, 5 का कोई पावर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे दिस नंबर विल नॉट एंड विद 0. Is this clear, बच्चों? Let's go to the next one. This again is a question in the exercise where students find difficulty in this. Explain why this and this are composite number. Composite number क्या होता है? Composite number वो number है जिसमें 1 और वो number के अलावा भी कोई factor हो. So a number having more than 2 factors, 1 and the number itself, is called a composite number. So more than 2 factors. So यहाँ पे देखो 7 into 11 into 13 plus of 13 can be written as 13 common ले लो, 7 into 11 plus of 1, which is equal to 13 into 78. ठीक है? So since this number has (13) also a factor other than 1 and the number itself, hence 7 into 11 into 13 plus of 13 is a complex number, is a composite number, sorry. Similarly, 7 into 6 into 5, 4 into 3 into 2 into 1 plus of 5. 5 अगर हम लोग कॉमन ले लें, so this is 7 into 6 into 4 into 3 into 2. Same लिखोगे, since this number has 5 also a factor other than 1 and the number itself, hence 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus of 5 okay, and this is a composite number.
क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, इररेशनल नंबर का डेफिनेशन पहले तो, व्हाट इज एन इररेशनल नंबर? सो वी नो दैट एन इररेशनल नंबर आर दोज नंबर्स which cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So a number s is called irrational if it cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Some examples of irrational number with which you are already familiar. So square root वाले जितने numbers हैं, ये सब irrational numbers हैं. Pi is an example of irrational number. Then we have a non-terminating, non-repeating decimal. This is also an irrational number. So before we prove that root 2 is irrational, we need the following theorem, whose proof is based on fundamental theorem of arithmetic. तो proof important नहीं है, बस theorem जानना important है कि let p be a prime number if p divides a square, then p divides a as well. So if a square is divisible by p, then a will also be divisible by p. ठीक है? So where p is a prime number. Okay. Now prove that root 2 is irrational, है ना? ये आता है एग्जाम में, रूट 2 के लिए आएगा रूट 3, रूट 5, कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इररेशनल, ऐसा पूछेंगे. ठीक है? सो प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल. तो इसमें बेसिकली मैंने नोट्स में भी वो बना के दे रखा है कि किस तरह से क्या स्टेप्स लिख के प्रूव करना है. ठीक है ना? सो पहले तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मतलब नेगेशन से इसको प्रूव कर देते हैं. Let us assume that root 2 is rational. This implies root 2 is equal to r by s. Now cancel out the common terms here. So this will be equal to cancelling common factors between r and s. Root 2 becomes a by b, where a and b belongs to z, b not equal to 0, and a and b are co-primes. तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल कर देते हैं, है ना? तो उससे वो a by b के बराबर हो जाएगा, where a b belongs to z, b is not equal to 0 and a and b are co-prime. There is no factor in common between a and b. a और b co-prime मतलब there are no common factors between a and b. So इससे हमारा रहा, है ना? So we have root 2b is equal to a. Squaring we get 2b square is equal to a square. So b square is equal to a square by 2. Right. Now if since b is an integer, hence a square by 2 will also be an integer. Now ये इंटीजर कब होगा? a square, so a square by 2 will also be an integer. So a square by 2 is an integer. This implies a square is divisible by 2. This implies
A is also divisible by 2. तो ये जो हम लोगों ने अभी तुरंत थ्योरम पढ़ा था कि if a prime number divides a square, that prime number will divide a as well. So that means if a square is divisible by the prime number 2, a will also be divisible by 2. So a is also divisible by 2 means we can write, this implies a can be written as 2 into c, 2c. Now from 1 and 2, b square is equal to a square by 2, मतलब b square is equal to a square by 2, which is equal to 2c का whole square by 2. So this is 4c square by 2. b square is 2c square or c square is b square by 2. Now since c square is an integer, hence b square by 2 will also be an integer. है ना? B square by 2 is an integer, that means b square by 2. So b square is divisible by 2. This implies b square is divisible by 2. That implies b is also divisible by 2. So b square is divisible by 2. This implies b is also divisible by 2. अब देखो यहाँ पे आ गया a is divisible by 2 and b is also divisible by 2. मतलब कि there is one more common factor 2 between a and b. ठीक है, मैं यहाँ बीच में लिख दे रहा हूँ. This implies a and b have 2 as a common factor. Now this implies a and b have 2 as a common factor. That is, so a and b have 2 as a common factor. That is, a and b are not co-primes. This contradicts our assumption. So this contradicts our assumption. Hence, root 2 is irrational. जो हम लोगों ने इसको rational assume किया हुआ था, root 2 is irrational. क्लियर है बच्चों? So, सर एक बार फिर से बता दोगे, तो हाँ, थोड़ा हाँ, सा कंफ्यूजिंग हो गया था जरूर. सर. जैसे अगर √3 हुआ तो √3 होगा तो उसमें भी ऐसे ही दिखाना पड़ेगा. हाँ, ऐसे ही दिखाना पड़ेगा. वहां पे क्या करेंगे कि वहां पे हम एज्यूम करेंगे कि √3 रैशनल है, तो वहां पे हम लोग √3 को, एक मिनट में दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूँ जिससे इसमें, हाँ, अगर हमें प्रूव करना है कि √3 रैशनल है तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लेट अस एज्यूम दैट √3 इज रैशनल, तो वहां पे √3 को हम लोग r/s लिख लेंगे, इसमें से कॉमन फैक्टर को काट देंगे और उसके बाद √3 को a/b के बराबर लिख लेंगे. तो √3 अगर a/b के बराबर हो जाएगा, a b belongs to z and b not equal to 0, a and b are co-primes.
अब यहाँ पे √3b इज इक्वल टू ये हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 3b स्क्वायर इज a स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा यहाँ 2 की जगह, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे b स्क्वायर इज a स्क्वायर बाय 3। अब 3b एक प्राइम नंबर है, अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि by that theorem which says that if a prime number divides a square then it will divide a as well, ठीक है। तो अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सो a इज डिविजिबल बाय 3, इससे हमारा आ गया। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, अब a डिविजिबल बाय 3 है तो a को हम लोग 3 इंटू सम नंबर लिख सकते हैं। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं a इज इक्वल टू 3 इंटू सी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि a इज इक्वल टू 3c। जब a इज इक्वल टू 3c एज्यूम कर लिया, यहाँ पे पुट किया b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 3, तो 3c का होल स्क्वायर बाय 3, 9c स्क्वायर बाय 3, 3c स्क्वायर हो गया। तो वहां पे हम लोग को आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। सर एक बार बता दोगे हमने a को 3c क्यों लिया, a इज इक्वल टू 3c अज्यूम क्यों किया? नहीं, ये दे रखा है ना कि a इज डिविजिबल बाय 3, तो a अगर 3 से डिविजिबल है तो मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ a, तो 3 फैक्टर ऑफ ए है तो उसको 3 इंटू सी हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे 3 और c दो फैक्टर्स हो गए एक। ओके सर। ए अगर 2 से डिविजिबल है तो मतलब 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ ए, एंड वी कैन राइट ए एज 2 इंटू सम अदर नंबर, राइट, क्योंकि 2 तो फैक्टर है, उसको तो कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो 2 से ये डिविजिबल है, इसका मतलब 2 को बाहर ले जा सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2 इंटू सम अदर नंबर हम लोग लिख सकते हैं। मान लो 8 है, 8 इज डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या हो गया कि ये 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, तभी तो 2 2 कैंसिल हो सकता है। तो मतलब 2 को हम इसको a इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं, यहाँ पे a इज इक्वल टू 3c लिख सकते हैं, है ना। ठीक है सर। उसी से फिर ये आ गया है यहाँ पे। आ गया समझ? यस। दूसरी तरह का क्वेश्चन इसमें जो आता है, दो सिंपल टाइप का आता है। एक, शो दैट 5 माइनस √3 इज इररेशनल। तो 5 माइनस √3 इररेशनल आया तो हम लोग इसमें एज्यूम कर लेते हैं 5 माइनस √3 इज रैशनल। सो लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल। अगर 5 माइनस √3 रैशनल है, इसका मतलब 5 माइनस √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू √3, और √3 इज इक्वल टू 5q माइनस पी बाई क्यू। अब p और q दोनों इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे इंटीजर माइनस अनदर इंटीजर डिवाइडेड बाय एन इंटीजर, दिस विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर ओनली, है ना। बट यहाँ पे √3 क्या है, इररेशनल है, राइट। सो RHS is equal to 5q minus p by q is rational, ठीक है। Why rational? Because 5q minus p belongs to z and q also belongs to z, दोनों z को belong कर रहा है और दोनों इंटीजर है ना। सो 5q माइनस पी भी z को बिलोंग कर रहा है, q भी z को बिलोंग कर रहा है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रैशनल नंबर मान चुके हैं। सो इस केस में 5q माइनस पी बाई क्यू विल बी रैशनल, बट √3 is irrational. So you cannot equate an irrational number to a rational number, है ना। So since we cannot equate
an irrational number since we cannot equate an irrational number to a rational number, hence our assumption is wrong. This implies 5 minus root 3 is irrational. यहाँ लिख लेना, let us assume that 5 minus root 3 is rational. क्लियर है बच्चों? सर इसमें बस ये इसमें RHS पहले हमने उसको वो कर दिया, फिर RHS में ये बताना है कि 5Q minus P is वो क्या लिखा सर? Belongs to Z. P by Q है ना? हाँ मतलब ये देखो, ये न्यूमरेटर भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, इंटीजर बाय इंटीजर ये रैशनल हो गया, तो RHS हमारा रैशनल हो गया और ये इरैशनल है, which is not possible. You cannot equate an irrational number to an rational number. तो इसका मतलब कि हम लोग जो एज्यूम किए हैं कि दिस इज रैशनल इज रॉन्ग, दैट विल बी एन इरैशनल नंबर. ओके सर. नेक्स्ट पे चलते हैं. वी हैव टू शो दैट 3 रूट 2 इज इरैशनल. ठीक है, तो 3 रूट 2 इरैशनल, यहां पे भी वैसे ही करेंगे. लेट अस एज्यूम दैट 3 रूट 2 इज रैशनल. अब 3 रूट 2 को रैशनल एज्यूम कर लिया तो मतलब 3 रूट 2 इज इक्वल टू P बाई Q और रूट 2 इज इक्वल टू P बाई 3Q. अब P बाई 3Q क्या है? दिस इज रैशनल and this is again irrational. Since P by 3Q is rational and root 2 is irrational. ठीक है, so since P by 3Q is rational and root 2 is irrational, we cannot equate them together. Hence, our assumption is wrong. ठीक है, hence 3 root 2 is irrational. Yeah, we cannot equate them together. क्लियर है बच्चों? आगे समझ में बच्चों? यस सर. Now, the last theorem of this is, let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form P by Q, where P and Q are co-primes. And
तो देखो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, और पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर पी और क्यू को प्राइम है, सो prime factorization q will always be of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m, where n and m are non-negative integers. Non-negative integers का मतलब whole numbers हो, ठीक है। ये उसी का कन्वर्स है कि अगर x is equal to p by q rational number है, such that prime factorization of q is of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. मतलब कि इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है बच्चों? वही सेम चीज यहाँ पे कि let x is equal to p by q, where p and q are co-primes, be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m, where n and m are negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating. तो हमें पता है कि जो रैशनल नंबर है उसके दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जिसका q जो है ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m के फॉर्म में होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, और जिसका q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो भी होगा रैशनल नंबर का, उस डिनोमिनेटर को एनालाइज करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। अगर उसमें 2 या 5 का फैक्टर है या दोनों है, आइदर 2 और 5 और बोथ 2 and 5, then it will be terminating. If it has a factor other than 2 and 5, then it will be non-terminating and repeating. तो यहाँ पे देखो इन सब क्वेश्चंस में तुमको क्या करना होता है, तुमको जो इसका डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स हैं, उसको लिखेंगे। सो 3 1 2 5 है, लेट्स से यहाँ पे 5 से पहले डिवाइड करते हैं। सो वी हैव So 3125 can be written as 5 raised to the power 4. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 raised to the power 5 into 5 raised to the power 4, 3125. तो this is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power n, क्योंकि यहाँ पे whole numbers हो सकता है, ठीक है, तो पावर 0 हो सकते हैं दोनों में से किसी के। 2 raised to the power 0, 5 raised to the power 4, that's why ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसको जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होंगे, किस फॉर्म में होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म। क्लियर है बच्चों? यस सर। सेकंड क्वेश्चन में इसी में कहता है कि जो टर्मिनेटिंग है उसको उस फॉर्म में लिखो, 13 डिवाइडेड बाय 3125 कर लोगे, मतलब तुम इसको डिवाइड करके देखोगे तो जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में आएगा उसके फॉर्म में हम लोग को लिखना है 0.00416 टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है बच्चों?
Yes, sir. ना सो इसका तो बेसिक रिवीजन तो हो गया है इस चैप्टर का। आपको क्या करना है कि रियल नंबर्स के जो असाइनमेंट्स हैं, खासकर ये वाला जो असाइनमेंट है, तुम असाइनमेंट 2 अभी के लिए कर सकते हो। असाइनमेंट 2 इज योर होमवर्क, रियल नंबर्स असाइनमेंट 2। ओके, एलसीएम वेलसीएम वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लेना रियल नंबर्स के। ठीक है, अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, है ना? तो वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, रियल नंबर्स फिर हमारा हो जाएगा रिवाइज। ओके, ठीक है बच्चों, विल Okay, sir. स्टॉप हियर देन, है ना? बाय, Thank you, sir. टेक केयर एवरीवन।